to the people of Pakistan. And that's all we are interested in, the enforcement of fundamental rights, the right to life, the right to a good quality life, the right to livelihood, to all the things that come together to provide the necessaries for a happy life. And not just an individual life. We are talking about a family. The Constitution talks about in Article 35, which is a principle of policy, that the state has the responsibility to look after the child, to look after the family, the child, and the mother. And we start from that premise as a court responsible for safeguarding the fundamental rights, to see that attention is paid to this priority. It is in this context that I am a guest with you today. This conference has been organized by a very dedicated team of workers, officers, and concerned citizens under the leadership of the Law and Justice Commission, represented by Ms. Rifat Bhatt, and with the cooperation of the United Nations Fund for Population, and of course the support and cooperation of the Government of Pakistan. This is deeply appreciated, because ultimately, as a judge, I'm not just concerned with looking for right and wrong. Yes, in most cases, that may be something that we are looking at. But what we need to know, first of all, in the context of public rights and human rights, what rights there are that need protection, and number two, how can they be protected? Today, I'm looking forward to the discourse that will take place in the 5 sessions that are mentioned in the program. Of course, there'll be talk about the enforcement of our judgment of 2019, but that's not all. I expect that we will be talking about also the success achieved by Muslim countries like Iran and Bangladesh. How did they achieve that? Why couldn't we achieve it? Both countries are careful about their resources, and yet there was something that they did which managed to receive success, and today I believe they are reversing their policies. And I am thrilled now to discover from Mr. Loab that the narrative today is not population control. It is a concern for the population to be productive so that they can earn their livelihood and contribute to the society and the community. And for that, the requirement is education. But what we need to understand is, how will those goals be achieved? We can't just leave it to the state. The state is already committed with its resources to so many other important priorities. There has to be some other vehicle, some other means of achieving that. I would submit that it's not talked very often about. We just impose things on the government, expect them to do everything. We have to involve the community. We have to involve society in contributing
If you recall the verse from the Holy Quran which was read by Maulana Sahib, it talks about a Muslim's fondness for his wealth and money. It acknowledges that, but it says you must contribute for the poor, for the needy, for those who need help. And above all, in fact, right at the beginning, your relatives. Islam strengthens the bond of the family. We need to reawaken those values. We have become concerned about individualism, about ourselves only. Only a generation ago, all of us, or most of us, would remember that our elders were either supporting or were supported by relatives to get educated. I can say that for my elders. And that was the way forward. What has happened today? But all that I'm trying to emphasize is that when we bring in people into the matrix that will be interacting with society and giving them education, giving them skill-based education, empowering them, it will be then that we will see the fruits in other forms, which is managed families, spacing, choices being exercised, women being respected. That is the process that will take place. It is not for the law to enforce that. And this is not a legal forum also. Yes, if there are solutions before us which are in black and white, we can evaluate their relevance or their propriety or their sufficiency for addressing an issue of rights or for enforcement of rights. But we cannot devise these solutions. It will be people like yourselves who will have to come forward. The time today requires the people of Pakistan to come forward and solve and to offer solutions to the state. If you remember, you will not remember because I don't expect any one of you to have been around in 1947, but we have all read that in 1947, when this country was formed, it had no finances. The partition of India had resulted in no finances being given to us. And do you know who funded the country? It was all private funds. And within 4 years, I read that Pakistan was giving a loan to Germany. In 1971, I read somewhere that Pakistan gave a loan to China. Why? How was it accomplished? It was accomplished because the people of Pakistan felt responsible. Do you know that there was a time when simplicity and thrift were respected? Today, we take pride in extravagance. Our elite leads us in that direction. I think the first step towards contributing to a cause is to become simple yourself. Your personal simplicity generates the surplus to contribute to that cause. We need community service, community involvement, and that's how, through a public-private partnership, I think, in my humble estimation, the issues can be tackled. We must bring in education, and particularly vocational training and skill-based education.
In my youth, I remember when we traveled from Lahore to Peshawar, there were at least 24 vocational training centers on the highway. Today we see none. Where have they gone? You see, these are things we must go back to the simple solutions. And our lives and our requirements and needs must be simplified. I don't want to give examples of where, as a citizen, I feel waste is taking place, because that is unnecessary. It's an attitude we must adopt. And I think that during the course of today and tomorrow, inshallah, we will find suggestions that will be useful. These are suggestions, as far as I'm concerned, which will occupy my mind and generate ideas on how I have to protect rights of the people who come to us. If we have one job, and for that there are 1,000 applicants. And do you know, litigation comes up right up to the Supreme Court for how those jobs are to be assigned or allocated or given to applicants. That we have to overcome. We have to create opportunities, we have to create talent and skill so that our population not only provides the services required in Pakistan, but also answers the requirements of jobs abroad. To say that we should reduce our population because it's a strain on resources is wrong. In the 70s, I remember, there was a new initiative. I was a young boy then, but I would read about it, a new initiative for labor to be exported to the Middle East. And that labor was contributing funds to its family, and they were able to run businesses, and they were able to grow and so forth. It was a remarkable experiment. And to this day, that cycle continues, but it has diminished because the level of skills has not improved. I may be getting rather extensive in my submissions. I want to thank you all for being present with us. I welcome this opportunity because I will be learning from here. Judges need to interact with ideas. We need to understand what are the needs of people and what are the needs of society, and what they are thinking, what the people are thinking, what our intellectuals are thinking. I look forward to a wonderful discourse. And at the end, I thank the Law and Justice Commission, supervised by the fantastic 3-member committee of judges who showed us their managerial and administrative skill. It's very impressive. I congratulate them. I thank also the kind of interest which the UN FPA has taken in this event, and in any case the subject of population concern in Pakistan. The government of Pakistan has been helpful as always, which is also appreciated. Thank you very much. ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए तमाम नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे Knorr presents Tikku, the smoky and spicy one. Knorr लाया स्पाइसी टिक्का, जो है स्पाइसी और स्मोकी फ्लेवर्स का परफेक्ट कॉम्बो। और मेरा भी। City of Life. City Housing, the gold standard living. आपकी शख्सियत की पहचान, फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को।
ना सब्सक्रिप्शन की झंझट, ना किसी रिटेलर के पास जाने की जरूरत। कॉल घंटे भर की, प्राइस सिर्फ मिनट की। तो अब लंबी कॉल से बैलेंस कटने का ना कोई डर। अभी टेलीनॉर 4G पे आओ और मोर से ज्यादा फायदा बार बार पाओ। आजकल के लड़के सैमसॉल का जलवा। सैमसंग। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। आपके एतमाद की एक वजह, असल हुस्न जिसे आईनों की जरूरत नहीं, आपका हसीन चेहरा आपकी शख्सियत की पहचान। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। रूफ मास्टर, जो छतों की हीट और वाटरप्रूफिंग के लिए एक बेहतरीन इलास्टोमेरिक रूफ कोटिंग है। रूफ मास्टर लगाओ, गर्मी भूल जाओ। आपसे नहीं, आप ही से पूछो। बाकी सब छोड़ो, सिया लगाओ। सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम, चेहरा ऐसा शफाफ, बता दी साफ साफ। ब्यूटी ऐप साइट पर। अब हर नजर आप पर। खबर तकम स्टोर माल रोड़ा, लड़श पे खबर तकम स्टोर माल रोड़ा। ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर माल रोड़ा। लड़श पे खबर तकम स्टोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना ड्रेसलोर। चरता कदम की दी औ चरता कदम की दी बाजवड़ गुलुना। The City of Life. City Housing. The gold standard living. पार्ले 24 कैरेट गोल्ड ग्लीम क्रीम ब्लीच, जो आपके नापसंदीदा बालों को ब्लीच करे। पाकिस्तान की पहली 24 कैरेट क्रीम ब्लीच, जो मेलानिन को कम करे और रंगत निखारे। पार्ले 24 कैरेट गोल्ड ग्लीम क्रीम ब्लीच। You have no idea how much I love every day of summer. Why? Summer upgrade. Hashtag it too. Moods are easy. Stay cool in the sun. Stylo 152 days of summer 23. जो चाहूं वो पाऊं। जियो न्यूज़ क्लॉक के लिए ताउन किया है Stylo 152 days of summer 23. जो चाहूं वो पाऊं। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है सेफगार्ड से नहाना, जर्म दूर भगाना। 9 मई के मास्टरमाइंड भी लाजमी कटहरे में लाए जाएंगे। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से मुतल्लिक़ इदारे अपनी तहकीकात जारी रखे हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा जो कहता था मर जाऊंगा डायलॉग नहीं करूंगा, उस शख्स से डायलॉग नहीं हो सकता। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेंगे। आम इंतखाबात में पंजाब के हर हल्के में शेर का निशान मौजूद होगा। हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे तक फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला। बिजली का 1 यूनिट औसतन 50 रुपये से तजावुज़ करने का खदशा।
नेपरा की जानिब से ऐलान किए जाने का इम्कान। इस वक्त मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये 82 पैसे है। गुज़श्ता माली साल बिजली का बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 91 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये 82 पैसे किया गया था। बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त मुल्क में बिजली का एक यूनिट औसतन तकरीबन 45 रुपये का है। पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मियांवाली में चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। कहा ऐसे मंसूबों का शुरू होना डिफॉल्ट की अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। पाकिस्तान और चीन के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मंसूबे से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का कहना है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। मुसलसल इस्लाहात की ज़रूरत होगी। नया प्रोग्राम मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुक्काम की फौरी कोशिशों को सहारा देगा। आने वाले अरसे में मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल दरामद अहम है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लोगों की मदद और हिमायत और मुल्क की बैरूनी इक़्तिसादी सूरत हाल मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। इंटरबैंक में $1 1 रुपये 13 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 59 पैसे पर बंद। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 276 रुपये 46 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 284 रुपये का हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल का कहना है कि आबादी के बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, एक मुलाजमत होती है तो हज़ारों दरख्वास्तें आती हैं। हमें मौक़े पैदा करने हैं, तालीम और हुनर देना है। परवेज़ मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। परवेज़ मुशर्रफ ने 2013 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ रवां साल 5 फरवरी को बैरून मुल्क इंतकाल कर गए थे। इस्लामाबाद में मागरा हिल्स के ट्रेल 3 में खातून से मुबैना ज्यादती मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक शेखुपुरा की रिहायशी खातून को नोमान नामी शख्स ने नौकरी का झांसा देकर रावलपिंडी बुलाया और इंटरव्यू के बहाने ट्रेल 3 ले गया, जहां गन पॉइंट पर उस शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का बताने पर जान से मारने की धमकी दी। गैर मुल्की सरमायाकार आएँ, कराची में इंडस्ट्री लगाएं, 10 साल टैक्स फ्री होंगे, मशीनरी पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की गुफ्तगू। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर ब्रीफिंग में कहा, धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है $5 अरब इस मंसूबे में आ सकेगा। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 का सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। रेले में फंसे 70 के करीब अफराद और माल मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। अब तक बच्चों और खवातीन समेत 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब से मुतासर सरहदी इलाकों में पंजाब रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन 9 जुलाई से जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। तनख्वाहों और पेंशन में वफाक के बराबर इजाफा करने का मुतालबा। एहतजाज के बायस पानी की सप्लाई मुतासर, सफाई का निज़ाम भी दरहम बरहम। रावलपिंडी में वासा, रेवेन्यू, सेहत, तालीम, RDA मुलाजमीन, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगा दिए। लाहौर में सेक्रेटेरिएट के बाहर सरकारी मुलाजमीन का धरना 5वें रोज़ भी जारी। हाफिजाबाद, भावलपुर और सरगोदा में भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। कोयटा में ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील। ग्रे कलर की शर्ट और पैंट के साथ ब्लैक कलर का हैट भी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। और एशिया कप के मैचेस किन तारीखों पर होंगे? एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास इतवार को दुबई में होगा। शेड्यूल के मैचेस की तारीखों को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी शिरकत करेंगे।
मामा की बेबी आप कहाँ गए थे, पैम्पर्स पहन कर सो रहे थे, एलो वाले लोशन से रैश कटर हुआ दूर और मेरे बेबी को आया सुकून। मेरा सबसे बड़ा डर था रैश का, तो मैंने क्रीम्स, पाउडर्स, ऑयल्स सब कुछ ट्राई किया, लेकिन रैश का डर तो रहता ही था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने स्विच किया टू पैम्पर्स, जिसमें पहले से ही लोशन विद एलोवेरा है, जो कबीर को दिन रात रैश से बचाता है। मेरी ना सुने, आप खुद ट्राई करें, आप भी कहेंगे अब से नो मोर रैश डिसीजंस। ट्राई पैम्पर्स। कुछ अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, इजी टू पो, इजी टू कुक। हम और आप माँ की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उसके एफर्ट्स को स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही सकते हैं। न्यू डालडा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। City of Life, City Housing, the gold standard living. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 15 माह मुल्क की मईशत बहुत ख़राब हालत में रही। Our detractors had been running rumor mills that God forbid Pakistan is going to default, that we, by the grace of God Almighty, the risk of potential default has been completely averted. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में खिताब के दौरान जापानी मेहनत कशों के एहतजाज का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जापानी मेहनत कश एहतजाज भी ऐसे करते हैं कि काम का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं होता। मैं एक दफ़ा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी, तो मुझे एक फैक्ट्री में लेके गए, तो मैंने देखा, देखें ये कौमें इस तरह बनती हैं, मैंने देखा कि आवाज़ आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूँ फिर आवाज़ आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ, मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा मुझे आवाज़ पड़ी तो मैंने अपने मेज़बान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर व्हाट इज़ दिस? तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये यहाँ पर अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब प्रोटेस्ट है, ये मशीनें भी चल रही हैं और कहते यही हमारा ये वतीरा है कि हम वक्त नहीं ज़ाया करते। ये मुझे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे मुतालबात मान लो मगर हम काम को नहीं रोकेंगे। इस तरह कौमें बनती हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ज़िला कसूर में दरिया सतलुज के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया है। अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि उन्होंने गंदा सिंह बॉर्डर के करीब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया है। रेस्क्यू 1122 ने अब तक 14,000 अफराद को मुतासरा इलाकों से निकाला है। और पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजाब रेंजर्स के एलामी के मुताबिक रेंजर्स ने रेस्क्यू 1122 से मिलकर रेले में फंसे अफराद को बचाया है। बयान के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन में 70 के करीब अफराद और उनके मवेशियों को रेस्क्यू किया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। खबर तकम स्टोर माल रोड़ा लड़श पे खबर तकम स्टोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा लड़श पे खबर तकम स्टोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर
the city of life. City Housing, the gold standard living. 100 GB डेटा 200 रुपए की ग्रैंड बचत के साथ 1600 में नहीं, अब सिर्फ 1400 रुपए के लोड में मंथली डिजिटल मैक्स से पाएं 100 GB डेटा, 1000 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 10,000 जोंग मिनट्स और SMS के साथ गो लूट लो डिस्काउंट्स और वादा की मोबाइल इंश्योरेंस सर्विसेज महीने भर के लिए। तो अभी डायल *7333# एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। अगर दांत ब्रश करते हुए खून नजर आता है तो आप कैसा टूथपेस्ट चूज करेंगे? नए पैराडोंटेक्स कंप्लीट प्रोटेक्शन में है 8 स्पेशली डिजाइंड बेनिफिट्स हेल्थी गम्स और मजबूत दांतों के लिए। टेक कंट्रोल और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम को पीछे छोड़ जाएं। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स दे चांद सा रोशन चेहरा। इसको देख लो, इतनी तपती हुई गर्मी में भी ये कैसे घूर रहा है। मैडम आपकी स्प्राइट। एक इसको भी देना और कहना कि ठंड रख। स्प्राइट लगा, ठंड रख। मामा की बेबी आप कहाँ गए थे? पैम्पर्स पहनकर सो रहे थे। एलो वाले लोशन से रैश कटर हुआ दूर और मेरे बेबी को आया सुकून। मेरा सबसे बड़ा डर था रैश का, तो मैंने क्रीम्स, पाउडर्स, ऑयल्स सब कुछ ट्राई किया, लेकिन रैश का डर तो रहता ही था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने स्विच किया टू पैम्पर्स, जिसमें पहले से ही लोशन विद एलोवेरा है जो कबीर को दिन रात रैश से बचाता है। मेरी ना सुने, आप खुद ट्राई करें, आप भी कहेंगे अब से नो मोर रैश डिसीजंस। ट्राई पैम्पर्स। आपकी शख्सियत की पहचान, फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। हेलो सर। अरे होने वाले दामाद जी, गले तो मिलो। आ जा। नो नो नो। फिर से डैंड्रफ का डर हमेशा सर पे सवार। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। गुलबर्ग इस्लामाबाद मुल्क की बेहतरीन रिहायशी स्कीम में प्लॉट हासिल करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई। बन जाए awesome, खुद की तो सुन ले। You're doing awesome, you know you're awesome. You're doing awesome, you're doing awesome, you're doing awesome. ऐप से नहीं, आप ही से पूछो, बाकी सब छोड़ो, सिया लगाओ। सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम, चेहरा ऐसा शफाफ, बता दे साफ साफ। ब्यूटी ऐप साइट पर अब हर नजर आप पर। City of life. City Housing, the gold standard living. देखिए और जानिए जदीद तर्ज़े जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू। आएं, जंग ड्रीम होम एक्सपो का हिस्सा बने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियल एस्टेट एक्सपो 15, 16 और 17 जुलाई पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद। नित नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और रुझानात की मालूमात, रियल एस्टेट के माहिरीन से फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर मुशावरत एक छत तले। आएं, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाएं। सिटी हाउसिंग के थीम पार्क्स पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट की नई पहचान बन चुके हैं, जहां डांसिंग फाउंटेन्स, एक्साइटिंग राइड्स, जू, फेरिस व्हील्स जैसे लैंडमार्क्स सिटी हाउसिंग को एक प्राइम एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। सिटी हाउसिंग में वाक़ई ग्लो पार्क्स अपने मुनफरिद थीम और खूबसूरती के साथ पेश करते हैं एक नया एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। सिटी हाउसिंग गोल्ड क्लास जिम, स्पा, कम्युनिटी क्लब्स, मल्टीप्लेक्स सिनेमास के साथ सिटी शॉपिंग मार्ट और चाइना सिटी रेस्टोरेंट जैसी सहूलियात से आरास्ता है। सिटी हाउसिंग में आलमी मेयार के स्कूल्स, पर्पस बिल्ट कैंपसेस, खूबसूरत मसाजिद और स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल भी सोसाइटी के अंदर वाक़ हैं।
City of Life. City Housing, the gold standard living. ऐप से नहीं, आप ही से पूछो। बाकी सब छोड़ो, सिया लगाओ। सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम, चेहरा ऐसा शफाफ, बता दी साफ साफ। ब्यूटी ऐप साइट पर अब हर नजर आप पर। जब हर घूंट हो स्ट्रॉन्ग तो व्हाई नॉट मेरी जान। हाय, आई एम ज़ारा। मैं आपकी एड एजेंसी ज्वाइन करना चाहती हूँ। उफ, हेयर फॉल। इफ आई डोंट लुक माय बेस्ट तो कैसे दूंगी अपना बेस्ट? पैंटीन, जिसमें है चावलों का पानी और प्रो विटामिन फॉर्मूला, जो हेयर फॉल कम करे सिर्फ 14 दिन में। पैंटीन, बाल गिरे कम तो खुले ज्यादा। डॉक्टर फारूक सत्तार कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अरकान सूबाई असम्बली ने कि जो वक्त अब असम्बली का रह गया है उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। चुनाचे हमने मुश्तरका तौर पर राना अंसार बाजी, जो हमारी सूबाई असम्बली की रुकन है, उनका नाम नामज़द हुआ है हमारी तरफ से कि वो चीफ मिनिस्टर साहब से और लीडर ऑफ द हाउस से MKM की जानिब से और MKM के अरकान सूबाई असम्बली की तरफ से आगे के मरहलों में बातचीत करेंगी अपने बाकी साथियों के साथ, बाकी अरकान के साथ, पार्टी के बाहम सलाह मशवरे से। और जो वज़ीर आला का इंतखाब होना है केयर टेकर गवर्नमेंट में, उसके लिए जो फ़ैसला होगा तो उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए हमने नामज़द किया है राना अंसार बाजी को। तो मैं इन्हें पार्टी की जानिब से, और ये पार्टी की पार्लिमानी लीडर भी हैं इस वक्त, और ये पार्टी को गाइड भी कर रही हैं सूबाई असम्बली में। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम जिम्मेदारी इन्हें दी जा रही है और इनकी सलाहियतों पर पार्टी को पूरा एतमाद है। और हमें उम्मीद है कि ये पार्टी को और सिंध के आवाम को, दही और शहरी सिंध के आवाम को, और फिर शहरी सिंध के आवाम को बिलखुसूस जिनकी नुमाइंदगी अभी मुश्तरका तौर पर करेंगी एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो मुझे उम्मीद है कि ये अपना भरपूर किरदार अदा करेंगी ताकि जमहूरियत का हुस्न है हस्ब इख्तदार हस्ब इख्तलाफ की नोक झोंक भी होती है, इख्तलाफ भी होता है और कुछ फ़ैसले मुश्तरका तौर पे करने का मौका भी होता है। तो मेरे ख्याल में वो